आस्किंग। एंड उनके साथ दोस्तों हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स अ कमेंटेटर एंड अ लवर ऑफ द स्पोर्ट, इंद्रनील पासू। गुड मॉर्निंग इंद्रनील। Good morning, good morning. Good to see you. Good to see you. Good to see both of you over here. It's a Thank you, pleasure. Same. And quickly, gentlemen, अजय मैं आपके साथ शुरू करूंगी। हमने आज अपने दर्शकों को बताया कि हार्दिक पांड्या युग का आगाज हम कर रहे हैं या होने वाला है। तो अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो ये एक मेजर चेंज है which you see कि यहाँ से आप किस तरह से इसका अंजाम अब देखते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक देखिए कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि रोहित शर्मा के बाद कौन, यू नो आई डोंट सी कि अभी एकदम बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप में वैसा प्रदर्शन हुआ नहीं, आप सेमीफाइनल का मुकाबला हार गए जो रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पर उसके बाद में लगता है कहीं ना कहीं ये भी सोच है, चयन करता हूँ कि हार्दिक पांड्या जैसे उन्हें IPL में जैसे कप्तानी की, साक्षी इज़ बीन ब्रिलियंट एंड जैसे फ्रेंचाइजी को जिताया, उनमें वो कैप्टन मटीरियल नज़र आता है और उनको पता है कि टीम को कैसे संभालना है, अपने खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहन देना है, और वो चीज़ें बहुत अहम रहती है, अहम फैक्टर रहते हैं किसी भी कप्तान के लिए। सो आई थिंक यू नो गोइंग फॉरवर्ड दिस गोइंग टू बी बिग सीरीज बिकॉज न्यूजीलैंड वी ऑल नो देयर अ क्वालिटी साइड, एक जबरदस्त साइड है वो। तो यहाँ पे आप युवा खिलाड़ी, क्योंकि कई आप सीनियर खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं है, तो उनके साथ आप कैसे आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक यस, आई थिंक जो सेलेक्टर्स या वहाँ पे VVS लक्ष्मण भी टीम के साथ हैं, तो वो देखेंगे कि कैसे कप्तानी करते हैं, क्योंकि यू हैव टू मेक दो स्टेप्स फॉरवर्ड। स्पेशली अब ये नया फॉर्मेट T20 के अंदर आप कई बार वो एक्सपेरिमेंट भी आप करते हैं, सोच विचार कप्तान के अलग रहते हैं, और एक नई सोच से जब कप्तान आता है ना उसका बहुत फर्क पड़ता है। करेक्ट, दैट्स वेरी राइटली पुट। इनफैक्ट इंद्रनील, मैं आपसे ये पूछूंगी क्योंकि हम हार्दिक पांड्या की यहाँ पर बात करें तो हम जानते हैं कि 2007 के बाद से वी हैवंट बीन द T20 वर्ल्ड चैंपियंस। कप्तान बहुत सारे बदले, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या से ऐसी उम्मीदें रखी जा सकती है कि इनकी कप्तानी के अंदर ये टीम इंडिया एक बार फिर से चैंपियंस होने का सपना देख सकते हैं? We can actually, because you know he's going to get a lot of time because next World Cup is in 24, Correct. the T20 World Cup, and last year when Rohit Sharma took the reins from Virat Kohli, देखिए सेम टीम खेला। I mean last year भी जो टीम था वर्ल्ड कप के, इस बार भी वही सेम टीम था, and we had last year we had Jadeja and Bumrah, still we didn't qualify for the same final, but coming to Hardik Pandya, he'll get that time. Rohit got 1 year to prepare his team और सेम टीम था, कोई ट्रांजिशन नहीं था। अब नए प्लेयर्स आएंगे, नए चेहरे आएंगे, और कप्तान भी जाहिर है नया होगा, और हार्दिक इज गोइंग टू टेक इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड। दैट इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर, बिकॉज ही इज समवन 1 year ago they said you know he just can't play just because on his batting skills. He has to bowl also. He is an all-rounder, and he's very important for the balance of the team. But today I can tell you he can play without bowling also in the playing 11. Yes, and अगर हम T20 की बात करते हैं तो somewhere we also see glimpses of a player inside हार्दिक पांड्या जो T20 सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छे से फिट होते हैं। अजय, हमें पता है कि महेंद्र सिंह धोनी रहे कप्तान, उसके बाद विराट कोहली रहे, रोहित शर्मा रहे। You know, these are very big names in themselves, and yet we have seen that somewhere ये तीनों लोग कप्तानी के साथ साथ भारत को वो पायदान नहीं दिलवा सके जिसकी हमने उम्मीदें रखी। Why do you think it, or how do you think it did not work out? आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स। साक्षी, आपकी टीम कैसी है। सी मैं कई बार कप्तान को ज़्यादा ब्लेम नहीं करता, यू नो इट ऑल डिपेंड्स कि सिनेरियो कैसा है, बिकॉज यू सी दिस वर्ल्ड कप, यू नो हमेशा चर्चा हो रही थी, अब यू नो ऑफ कोर्स रोहित शर्मा वेरी सीजन कैप्टन और उनकी कप्तानी भी अच्छी रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप देखिए ना, बैटिंग में समस्या नहीं है। आई थिंक द प्रॉब्लम फॉर इंडिया वाज द बॉलिंग डिपार्टमेंट। यू सी दैट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, यू नो दे वन कन्विंसिंगली, 10 विकेट से जीते, विकेट नहीं ले पाए। एंड यू सी ऑन द अदर साइड टीम्स लाइक पाकिस्तान और इंग्लैंड, यू नो कहीं ना कहीं उनके पास वो गेंदबाजी है। So I think it all depends on the kind of team also you have. You know, captain is as good as the team you have, the resources you have. So I don't think कि कई बार बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुए हैं। यहाँ उससे पहले जब विराट कोहली कप्तान थे UAE में, आपको याद होगा हम 10 विकेट से पाकिस्तान से हारे थे। तो ऐसा नहीं कि देखिए कप्तान पे आप ज़्यादा कुछ डाल नहीं सकते, बट आई थिंक you need to have the resources because when MS Dhoni won the World Cup for India, it was a young side. You know, T20 क्रिकेट नहीं थी, पहले बार वो विश्व कप हो रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके बाद ऑलराउंडर्स बहुत थे, और मुझे लगता है ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा चयनकर्ताओं को, टीम को, कि कप्तान को, कि आपके पास वो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स होने चाहिए जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या खुद हैं, पर और भी आपको लेके आने खिलाड़ी, क्योंकि आप इंग्लैंड को देखिए कितने रिसोर्स उनके पास गेंदबाजी में है, पाकिस्तान के पास आप देखिए, तो कहीं ना कहीं वो आपको जो सोच है वो पैदा करनी है, और वो खिलाड़ी आएंगे तो कप्तानी अपने आप अच्छी नजर आएगी। राइट, एंड एक चीज़ और उठती है यहाँ पर इंद्रनील की, हम देख रहे हैं 2024 से तो हार्दिक पांड्या T20 के कप्तान बन जाएंगे, लेकिन एक इसमें अहम मुद्दा, अहम सवाल, ये बात जो उठ सकती है वो ये है कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर एंड एज अ मैन इन हिमसेल्फ ऑल्सो इज अ मैन
हु इज़ ऑफ कोर्स उनके अंदर एनर्जी बहुत है, थॉट प्रोसेस जो उनका रहा है वो बहुत अलग रहा है। गुजरात टाइटंस के जब कप्तान भी बने तो हमने देखा किस तरह की एनर्जी वो लेकर आए। डू यू थिंक ही विल हैव दैट स्मूथनेस ऑफ ट्रांजिशन कि वो उसी तरह के थॉट्स को, उसी तरह के विजन को और उसी तरह की एनर्जी को वो इंटरनेशनली T20 वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं T20 इंडियन टीम की, उसमें उतार पाएंगे? Absolutely, because he's someone who wants to win, which is why last year when there were question marks about his availability in the T20 team and Hardik not bowling, still everyone backed him from Dhoni to Kohli to Rohit Sharma because he's someone who is desperate to win on the field, and we saw in that Pakistan game, the league game, when Virat and Hardik were batting and how Hardik went in and kept pushing Virat that we have to win, take it deep, and something quite similar to what Dhoni is to do. You have to be cool. You can't press the panic button that easily. So Hardik has those qualities, and that's why he became successful on his first year as a captain for the Gujarat team. And this year also, we are hoping that he will take care of the white ball cricket, not only T20, also in 50 over, because he has that sort of potential to carry everyone together. A captain is not only thinking about his own game, right? You have to carry the entire team, and Hardik has that because his behavior, his cool, he doesn't loses his cool. A lot of qualities, and the benchmark, the template is set by MS Dhoni. And you have to follow his footsteps to get that success. After all, he's the most successful T20 captain ever played the game. ICC most successful T20 captain MS. He's got all the possible trophies. So that's why, and Hardik is a huge Dhoni follower. And that and the fact we saw in Ajay, you remember that one day series against England when Rishabh scored that in a decider. It was Hardik who was there on the other side, and he's someone who won't give up. He's not timing the ball like in the Pakistan game, but he stood there. He'll stand his ground. He'll ensure he's not losing the battle. So these are the rare qualities, and that's why I said he can right now, even without his bowling, which I find it little off track because he bowls it too short at once in a while. But he's a thinking bowler. But as a batsman, he can still play and lead India because of that willpower that I have to win this game. I think also because of the vision, और आपने एक बात बहुत अच्छी कही इंद्रनील की, at the end of the day MS धोनी has been the most successful captain for India आज तक अगर हम T20s की बात करें, and Hardik will have to take his cue from there when he needs to follow in those footsteps. Well, we'll have to wait and watch to see how that plays out eventually जब पांड्या कप्तानी की कैप पहनते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर, आइए देखते हैं। There you have कैप्टनसी रिकॉर्ड जो इनका आज तक आईपीएल में रहा है। 15 मैचेस ये खेले हैं जिसमें से 11 जीते हैं और 4 हारे हैं सिर्फ, मतलब 73.33 का इनका एक तरीके से अभी तक का पूरा हम कह सकते हैं ओवरऑल एनालिसिस रहा है। अगर आईपीएल के अंदर कप्तान के तौर पर बात करते हैं, आईपीएल 2022 में भी अजय, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ऐसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताना चाहें कि आप क्या देखते हैं? एब्सोल्युटली साक्षी, आई थिंक द बिग पॉइंट इज 450s। आप देखिए बतौर एज अ कैप्टन कैसे उन्होंने टीम को लीड किया, स्ट्राइक रेट वाज फिनोमिनल। देन नॉट ओनली दैट रन्स दैट ही स्कोर्ड 487, पर साथ में जैसे उन्होंने 8 विकेट लिए। एंड यू सी दैट इकॉनमी बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स ही बोल्ड इनिशियली, कई बार उन्होंने पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करी, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करी, तो दोज आर रियली गुड। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बयान करते हैं कि जो कप्तानी का जो भार है वो ज़्यादा नजर नहीं आया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और इंद्रनील हम देखते हैं कि T20 में अगर हम बात करें इंटरनेशनल की हार्दिक पांड्या को, तो वर्सेस न्यूजीलैंड, यानी क्योंकि अभी से 3 T20 इनके शुरू होने वाले हैं आज से, तो अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हम बात करते हैं तो करीबन 79 मैचेस में 8 हमने खेले हैं जिसमें से इन्होंने खेले हैं, मतलब, और उसमें से उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो आज तक 71 नाबाद 71 जो इनका का नॉट आउट रहा। एंड न्यूजीलैंड के अंदर इन्होंने वहाँ पर जाकर आज तक 3 मुकाबले खेले हैं। एंड उसमें हम अगर देखें तो ओवरऑल भला ही इनके रन्स 1117 हैं, न्यूजीलैंड के अंदर वहाँ पर उन्होंने 25 रन बनाए हैं। एक तरह से आंकड़े कहते हैं ना कि अपने आप में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन उनसे बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता है अगर हम ऑन अ गिवन डे देखें, बिकॉज आमतौर पर खिलाड़ी उसी दिन के ऊपर फोकस करते हैं, बट दे प्रोवाइड द बेस फॉर अस टू सी how consistent has the player been throughout. And for that matter I'll come to you now Ajay, because हमने देखा, हम बात कर रहे थे कि गुजरात टाइटंस के कप्तान भी रह चुके हैं और इन्होंने पहली बार ये हैट पहनी क्योंकि एक नई टीम भी थी, लेकिन उसमें हमने एक हार्दिक पांड्या का बहुत ही नया अवतार देखा, a man, a player that none of us had seen before.
not just as a player but also as a captain, he carried and wore that hat with effortless ease. क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा था कि मुझे याद है गुजरात टाइटन्स जब जीत गए थे कि उन्होंने उस समय कहा भी था कि ही इज लव्ड वेयरिंग द हैट ऑफ अ कैप्टन एंड ही वुड वांट टू कैरी दैट ऑन. योर टेक? एब्सोल्युटली. आई थिंक कई बार क्या होता है कि एक फ्रेंचाइजी आपको फेथ दिखाती है, गिविंग द कैप्टनसी इज अ बिग थिंग फॉर एनी प्लेयर, और आप उसको कैसे होल्ड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं और कैसे आप प्रोग्रेस करते हैं. आई थिंक एंड दैट IPL आई रिमेंबर, जैसे उन्होंने बैटिंग करी, गेंदबाजी करी, एंड बड़ी चीज़ है जैसे टीम को संभाला, बिकॉज इन IPL इट्स नॉट ईजी. यू हैव नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, यू हैव डोमेस्टिक प्लेयर्स, और आप क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाते हैं, ऑल दोज फैक्टर्स रियली कॉन्ट्रीब्यूट. आई थिंक दैट वे हार्दिक पांड्या वाज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली ऑफ द फील्ड बट ऑन द फील्ड. T20 सच अ पेसी गेम. साक्षी, आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और वो जो आंकड़े भी हम देख रहे थे ना, वो दर्शाता है कि कैसे इन्होंने खुद भी परफॉर्म किया. एंड यू कैन सी इन हिम दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड कैप्टन. ही नोज हाउ टू गो अबाउट, और ये चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर रहती हैं. एंड अ बिग थिंग ऑल्सो फॉर हिम इज हार्दिक पांड्या दैट ही इज अ मैच विनर. आप अपने बलबूते के ऊपर यू कैन विन गेम्स. ही इज एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, वी ऑल नो दैट. पर कहीं ना कहीं जैसे वो मैच जिता सकते हैं, सो एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी. यू रिमेंबर कपिल देव, 83, बीइंग ऑल राउंडर, कैसे उन्हें टीम को आगे बढ़ाया. सो आई एंड प्लेयर्स लुक अप टू यू एज अ प्लेयर कि आपके पास वो स्किल है, वो स्किल सेट है कि आप कभी भी किसी पोजीशन में टीम को निकाल सकते हैं. एंड दैट्स द रीजन बीइंग एन ऑलराउंडर इज ऑलवेज फेवरेबल. आप एक डिपार्टमेंट में कई बार नहीं चलते, दूसरे में आप चल सकते हैं. आई थिंक हार्दिक के लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है, एंड विद दैट ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर एज वेल. Absolutely brilliant fielder. I want to add more to what Ajay bhai is saying. Initially when he started off captaining the Gujarat franchise, he wasn't as fluent as we are seeing today. He was that time Indian cricket was deciding on two captains, either KL Rahul or Rishabh Pant, but Hardik was nowhere in the scene. But there was one match where he lost his cool, and later on he happened to win that game, and he realized that losing cool is not the way forward. And individual brilliance, what Hardik learned as a captain for his franchise, individual brilliance can win you a game, not a tournament. And that's why he empowered everyone, to express themselves when they were playing for his franchise under him. And there was Ashish Nehra also, there was Gary Kirsten also, and that's a hallmark of a good captain, which Rohit Sharma was also. I mean, and Ajay bhai rightly pointed out, a captain is as good as his team. But if you see the overall character of Hardik Pandya, last year he was in a huge controversy, in that watch controversy, was carrying watches from, and he loves investing in lot of things. But there was always that feeling that he can do something special. I know a lot of people backed out because he was dropped. It was reported from the Indian team. But the comeback, the way it happened, he went through the process, he went to NCA, he went through the grind. देखिए, आपको अगर कुछ अलग करना है, आपको थोड़ा डर्ट आपको बॉडी में लेना पड़ेगा. यू हैव टू बाइट द डस्ट, एंड हार्दिक वाज रेडी टू डू दैट, एंड टुडे इज एंजॉयिंग, एंड इट्स नॉट अ ड्रीम रन. दैट्स व्हाट वी आर वंडरिंग, बिकॉज उनके बैटिंग स्किल और उनका बॉलिंग स्किल दोनों अलग है. बट अभी जिस तरीके से वो उभर के आए हैं, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द मैन टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज ही कैन विन यू, एज Rajay bhai rightly pointed out, he is a match winner. And not with the ball. देखिए उनका बोनस है, whatever he gets out of bowling. But he can stay on, hang in there, can take the, and after MS Dhoni, he is the only batsman who is doing it, taking the game, and someone who can score 20 runs in last 6 balls. Of 6 balls, he has that against quality Pakistan bowling, against quality any English bowling. So he has those potential. तो इस तरीके से I think that confidence, पूरा game ही confidence का है. अगर you can rub that confidence to the teammates, अब देखो आप पूरा चैंपियन साइड बन जाएगा. और एक इंडिविजुअल नहीं है, 11 है आपके पास साइड. वेरी ब्यूटीफुली एंड करेक्टली पुट. इन फैक्ट अजय, आपने एक बात कही थी अभी कि हार्दिक पांड्या के अंदर आप वो एटीट्यूड देखते हैं कि वो कप्तानी को अदा कर सकते हैं और कप्तानी के रोल को बड़ी आसानी से निभा सकते हैं. मैं इस बात पर आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी वक्त हो गया है कि अपने दर्शकों को हम कुछ और आंकड़े हार्दिक पांड्या के ऊपर ही दिखाएं. आइए देखते हैं कि वो क्या है. T20s में, यानी 2022 में T20s में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन किस प्रकार रहा है. कुल मिलाकर इन्होंने 25 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 564 रन बनाए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. लेकिन सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर स्टैंड आउट होती है वो है उनका स्ट्राइक रेट.
Yeah, absolutely. And also with the strike rate, Sakshi, what really is really pleasing for me is the number of wickets that he's taken. You know, because I was mentioning about this ability that he's got. Batting to kar hi sakte hain, you know, with that 20 wickets this year. So that means he's been really good, and that's what pleases you most. You know, he's fit, he's ready to go, and as a bowler, he can contribute so much for the side. And also, you know, one more factor with what just comes to my mind about Hardik is, you know, he's played under MS Dhoni, he's played under Virat Kohli, he's played under Rohit Sharma. Now he's, you know, given opportunity by the selectors to captain in New Zealand. तो यू नो आपको पता है कि उनका किस प्रकार उनका क्या फॉर्मूला रहा था या कैसे उन्होंने कप्तानी करी है. सो यू नो यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, यू कैन लर्न फ्रॉम द पॉजिटिव थिंग्स एज वेल, क्योंकि हर कप्तान कहीं ना कहीं कई बार गलती भी करता है. यू नो, एंड ऑन द फील्ड व्हेन यू आर ऑन द फील्ड विद द टीम, इन द ड्रेसिंग रूम, शेयरिंग ड्रेसिंग रूम, इन द प्रैक्टिस सेशंस, यू कैन गेन सो मेनी थिंग्स. यू नो, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अ ग्रेट मैन लाइक MS धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा. तो आपका अपना अपना स्टाइल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे फंक्शन करना है, मैंने कैसे कैप्टनसी करनी है, फील्ड में मेरे क्या डिसीजंस होंगे. बट यू नो दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज बी होल्डिंग गुड फॉर हार्दिक पांड्या. यू नो ही विल नो हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर. और ये यही होता है कि आपको मूव आगे करना है. और आई थिंक अब 2024 में भी देखना होगा कि यहाँ पे सिलेक्टर्स की क्या सोच है, कोच की क्या सोच है, किसको कप्तान बनाना चाहते हैं. बट आई थिंक दिस सीरीज इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम. Yes, of course, it will be important. In fact, he's put it also very aptly out there कि हर एक पर्सन का, हर एक कप्तान का अपना एक यूनिक स्टाइल रहा है. हार्दिक पांड्या के लिए जो सबसे ज़्यादा उनके फेवर में बात हुआ करती है वो ये है कि दैट ही इज प्लेड विद द लेजेंड्स, बीन अ पार्ट ऑफ ऑल द लेजेंड्स थ्रू द कोर्स ऑफ द years, and that in itself is not just an inspiration, but more than that, it would have been the best learning possible. Indranil, you wanted to add something? No, and he's going to get that time also to build his team, which MS Dhoni got in 2007. He could build his team. Then we got that success in 11 and in 13 in Champions Trophy, 2011 50 over. So as a captain, you have to be given that freedom. And with so many big players, at times it's not possible. Rohit couldn't build his team. He was carrying the Virat Kohli team only. Correct. I mean, yes. You have to have your choice of players. This is one thing which is captain's due. You know, I mean, captain deserves to build his own team, which Rohit couldn't. He had to just carry forward what Virat left. You know, so Yes. that's one big point. वेरी राइटली पुट. आई कम टू दैट. उसके ऊपर मुझे एक दिमाग के सवाल जरूर आया था, लेकिन अभी दोस्तों आपको कुछ और आंकड़े हम दिखाना चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर. T20 वर्ल्ड कप में किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, एक नजर डालते हैं. वेल, इस साल का वर्ल्ड कप जो बस अभी हाल ही में खत्म हुआ है 13 नवंबर को, अगर हम बात करें तो उसमें 6 मैचेस भारत ने खेले, जिसमें हार्दिक पांड्या भी उसका हिस्सा थे. कुल मिलाकर 128 रन इन्होंने बनाए. स्ट्राइक रेट जो इनका रहा 131.95 का, इकोनॉमी 8.11 और 8 विकेट्स लिए. अजय, हार्दिक पांड्या एक ऐसे नाम होंगे जो शायद इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर देखा जाए तो टॉप 3 प्लेयर्स में से कहे जा सकते हैं. वुड यू शेयर दैट थॉट? Absolutely. I think, you know, given the scenario at the moment, I think the world cricket, I think he is the top leading all-rounder for me. Yeah. You know, there might be other names as well. There's no doubt about it. But just the kind of skills that he has, and being the finisher that he is with the bat, and the way he contributes with the ball. Because I think the big plus for India at the moment is Hardik Pandya's bowling. We all know that what he can do with the bat, but कहीं ना कहीं आपको वो जो extra overs होते हैं ना, you know, as a 6 bowler, you know what he can contribute, pick up wickets. और वो वर्ल्ड कप में देखा जैसे उन्होंने wickets लिए, and you know once he is fit, he can gain bowl with that pace as well. You know, he's got that pace behind him. His skill set is good. His lengths are very good, and now with the experience that he's travelled all the world, you know, in different conditions, he knows किस length पे आपको hit करना है on different tracks. You know, because bowling in Australia is different, bowling in England is different, bowling in India is different. The subcontinent is different, bowling in UAE is different. So he knows exactly the length that he's got to bowl. So I think, you know, he's a big plus, and no doubt about it. You know, he's one of the leading wicket takers India के लिए अगर आप T20 क्रिकेट की इस साल भी आप बात करें. And I think overall in world cricket में I think he's left his mark. You know, being an all-rounder. Yes. And you know उनका एक स्टाइल अलग है, बैटिंग के अंदर यूनिक स्टाइल है, but the big thing is that he always delivers for the side. Yeah, he delivers in all the formats, all the genres. चाहे आप बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें. And as they say that it's not the batsmen but the bowlers who win the matches always in cricket. And अगर वो कंबाइन हो जाए एक ऐसे कप्तान के साथ जिनकी विजन ऐसी हो जो एक पूरी एक अलग ही टीम बना दे, a team that can be a winning combination, then it's just a win-win situation for any team. Here's hoping that we get to see that in the man that Hardik Pandya as a player is, and also hopefully as the captain that he will be. अभी वक्त हो गया दोस्तों कि यहाँ से रुख किया जाए सोशल मीडिया की ओर और देखते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में क्या बातचीत हो रही है.
And there you have it. Chandresh Narayan is saying India's stand in court says the T20 format now calls for multi-dimensional players where batters bowl and bowlers bat. But the squad chosen for New Zealand has no such players except maybe Hardik and Sundar. Does India really not have those type of players currently? And we're talking of the first T20 that we're all set to start from today. We have Subhayan Chakrabarti saying VVS Lakshman is bang on here. India need this. More number of bowlers who can bat adds depth to the batting. That is the need of the format, and I'm sure that more teams will try getting this in their selection process and identify players who are multidimensional. Times of India, the sports department has tweeted to say roadmap for 2024 T20 World Cup starts now. A lot of people will get enough chances. Hashtag Hardik Pandya. Sports Express says there are a number of players in the Indian side who are resting. They have brought in other players. Clearly, they see the challenges being faced with such a tight schedule. It's sort of the nature of the beast, said Williamson, and that's Kane Williamson out there. Chandresh Narayan once again tweeting that is that the end of Ravichandran Ashwin across white ball, hashtag cricket, and Dinesh Karthik in T20s? We will never know because apparently doors are never closed for anybody. Cricket, Twitter, we're looking at hashtag New Zealand versus India. Well, Indranil, your head did tilt towards me when I mentioned the tweet that said that is that the end of the road for Ravichandran Ashwin? Your take on that? Looks like in white ball cricket, and what perhaps in 50 over he might get a look in, but in T20 he's definitely not going to be playing again. And you know the downslide of off spinners, that's a different debate altogether. But coming to DK, he's already started commentating, and I was always from today. I mean, he's commentating on the game today. Yes. For a private. We also got the hint that was mentioned. Yeah, but so you know, look, going forward, what you need is you need people with a bigger understanding of the game. And Hardik Pandya, we're sticking to that topic, and Hardik is someone whose knowledge about bats is quite unique. The way he talks about cricket bats, I've seen Saurav Ganguly had a unique knowledge. He was one of the leading captains. MS Dhoni, he would make that bottom part of his bat oval shape so that he can play those low full tosses for sixes, and everyone is using that for quite some time, for last 3-4 years. Kapil Dev showed me in his office this first bat in MS Dhoni uses, there's a round shape at the bottom. So and Hardik knows which over, which sort of bat is required, what sort of weight is required to hit the ball out of the park, what sort of distance, he does that kind of study. It shows in-depth understanding of cricket bats, which is important, and he can maneuver accordingly, and which is remarkable. And these are great ingredients when you're in the process of becoming a captain for India. And at least for what we can understand, he's going to be here. He has to stay. T20 captain Hardik Pandya, Rohit Sharma will not come back as T20 captain from what we are hearing. So Hardik is here to stay. Whether he will take care of 50 over or we'll have two captains, we'll wait and watch. But BCCI gave, they pushed, literally pushed Virat Kohli last year, saying that we can't have two white ball captains, if you remember, sir. Yes. So will we see Hardik as a white ball captain for India? We want to see that, because we need a new face so that he can have his own set of vision that he vision has and own set of players. Let him build the team. Sir, do you agree? Yeah, absolutely. See, end of the day, you want results, and that's the biggest thing. What we all know is after 2007, we haven't won a T20 World Cup. So it's been a long time now, and you got to look forward now. You got to have those players. You got to see those players, even at domestic level. Who are coming through, and need those multi-dimensional players, as VVS Lakshman was mentioning about. Because कई बार क्या होता है कि आप वही player से persist कर रहे हैं, और आप you see a team like England. Few years back, everybody was saying it's just a test side, even playing T20 cricket. And now they're a completely different side, and they looked absolutely amazing, to watch. Not that they just won the World Cup, but just the way they played that World Cup. So I think you need those players, and I think unke paas wo quality nazar aayi hai, and India have to think on those lines as well. And pushing out Joe Root out of T20 team. I mean, just imagine the kind of tough decisions you have to take to build a good team.
एंड इट डजंट इवन लुक लाइक इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो ऐसा लगा भी नहीं कि दे वर मिसिंग आउट सम मेजर प्लेयर्स विच इंक्लूडेड ऑफ कोर्स अगर हम डेविड मिलर की बात करें दे हैड सम मेजर प्लेयर्स मिसिंग बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ हार्दिक पांड्या ऑल्सो अगर हम हार्दिक पांड्या की यहाँ पर बात करें इंद्रनील तो जिस तरह के खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या सारे ही फॉर्मेट्स के अंदर ये फिट तो होते हैं बट एट द सेम टाइम देर इज समथिंग अबाउट हाउ हिज ब्रेन वर्क्स एंड ही इज एबल टू ब्रिंग दैट इन टू हिज एग्जीक्यूशन एंड नॉट जस्ट द नैरेटिव बट ऑल्सो गेट इट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टीम. दिस इज द सेम पर्सन जब इन्होंने गुजरात टाइटंस एक नई टीम को संभाला और उस टीम के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ भारतीय खिलाड़ी नहीं थे क्योंकि हम आईपीएल की बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे. ही वॉज एबल टू ब्रिंग देम टुगेदर एट द वर्ड गो. दैट्स नॉट एन ईजी फीट टू अचीव. Do we see that happening with that effortless ease? Because do you think somewhere he's always wanted to wear that captaincy cap? He was showing those signs of taking over the reins of Indian cricket in the IPL itself. And that particular match, I don't exactly remember the opposition. When he came out, he was run out, I guess. And he came and threw his bat and his gloves. And he was not happy at all with the dismissal. And later on, this team managed to win this game and he was smiling. He said, certain things are beyond our control and the captain, if he can understand those basic principles, you can only control the controllables. Then the journey becomes a lot more easy. And he has got backing of the big bosses of BCCI, let's put it that way, because of his charisma as a cricketer, the way he carries himself. He doesn't loses his cool. That is the best thing about Hardik Pandya, which he was earlier. He looked like someone who was like a spoiled brat. I remember he went for that show with Karan Johar. The way he spoke, the way he came back, and there was a joke in Indian cricket that if you want to, see the best of Indian cricketers, you have to send them for Karan Johar show. They come back a lot more mature. KL Rahul also came back with a lot of runs, and so that's the hallmark of Hardik Pandya, because he is someone who can carry people with him. He is not someone like a Virat Kohli. He will go and score all the runs and let others take the back seat. He wants everyone to be together on the front seat, which is a great quality, and that's how he could win those games, because it's not about one champion or two champion. It's about a champion of 11 players, and that's why he won that IPL. And I would also like to mention batsmen win your games. It's always the bowlers who win your tournament. And Hardik is also a good bowler, so he understands, he can relate to a good bowling. He can set his own field. These are very important things when you're leading the side. And after such a long time, and Kumble could have been a very good captain. He was a test captain because he was a bowler. And we never have a bowling captain. And here we have a batting all-rounder who is handling. So expectations are more. And 23, 24, 2 World Cups. एक में तो हाथ देने दो यार. We deserve it. Of course, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हम उम्मीद हमेशा बेस्ट के लिए करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे 2024 की T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो जब हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे तो उम्मीद यही है कि well we reach the finals and go on to win that, but that of course time will tell us कि वो होता है कि नहीं होता. और एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली अजय मैं आपसे पूछूंगी हार्दिक पांड्या के ऊपर ही कि there is this person that we have seen. It is always said that खिलाड़ी समय के साथ maturity दिखाता है. You evolve. As humans we evolve, professionals के तौर पे भी we evolve. But at the same time, do you think somewhere just parenthood also plays a role in bringing about a change in the way a player evolves to become mature or wiser? Do you think there's a connection in how your personal and professional lives are intertwined to make you the person you are? Absolutely. I feel it makes a big difference because with the passage of time, as you mentioned about parenthood as well, I think you become much matured as a person. And that's what you can see of Hardik Pandya now. That is exactly what Dada was mentioning about, because with times you learn from your mistakes. And मुझे याद है कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसे matches होते थे when you used to lose temper, but now you don't see with Hardik Pandya. He's a different person altogether on the field, off the field as well. Looking very relaxed, spending quality time with his family, and that makes a big difference. The more settled you are in the mind, that shows in the field as well. And I think that's what we're seeing of Hardik Pandya at the moment. Yes, of course, that's what we are getting to see of Hardik Pandya of the moment. और आज हम आपको बता दें कि पहला T20 भारत और न्यूजीलैंड के बीच में शुरू होने वाला है. वो तो कुछ देर बाद होगा, लेकिन नाउ टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या के ऊपर ही इंद्रनील अगर हम बात करें तो आज भी उस T20 का वो हिस्सा होंगे. Of course, goes unsaid. But do we see that this team will be able to now pick up itself
एंड फोकस ऑन इंडिया न्यूजीलैंड एंड हार्दिक पांड्या खासतौर से अगर बात करें तो आंखें उनके ऊपर भी होने वाली, निगाहें उनके ऊपर रहेंगी क्योंकि वो बहुत अहम कड़ी निभाते हैं. तो डू वी सी अस एज इंडियंस एज द टीम being able to collect itself together and be geared up for this game also? It's very tough for the players, you know, but they are professionals. They have to do it. And with that team playing the World Cup, 7 players are not going to be in scheme of things. I mean, I can count on my fingers. Virat Kohli, Rohit Sharma, Dinesh Karthik, Ashwin, Bhuvneshwar Kumar. Bhuvneshwar Kumar, although is part of the T20 team right now, but eventually Hardik will get that chance to build that team, and he's a very perceptive captain. He is very instinctive, like MS Dhoni used to be. A little interaction people have done with him, they have told me that, you know, Hardik is someone who loves taking his chances, but he won't give up. He won't give up without a fight. He is, and we saw that in that game against England. He's the one who sort of took Indian score to a respectable total. Otherwise, would have been over within 140, 130 perhaps in that game. But this is Hardik Pandya, because this man is going to take Indian cricket forward. I mean, I can't see anyone doing this kind of showing this kind of authority on the field, both with the bat and ball, and not so much with the ball, but with the bat and coming out in the middle order. And middle order is supposed to be the backbone of any side. And you know, Mumbai Indians, we talk about their success story, 5 times winners, and they could win those many trophies. And Hardik played a huge role in that. You know, Hardik and his brother Krunal Pandya and Kairon Pollard, these three, they were, you know, रीढ़ की हड्डी होती है और वो कभी गिरता नहीं है. तो and you have to have a good all-round. I mean, the fact that we couldn't do well in this World Cup because we didn't consistently perform in the middle order, and Hardik didn't perform. He must be really cursing himself the way he batted in the tournament. But this is how it, you know, he wins some. He had a bad tournament. Let's put it that way. Otherwise, his slate was absolutely clean in terms of he ticked all the boxes. He was right in the money, but only this World Cup, only last game he performed. You want to say something, sir? Yeah, you know, what I also feel is that, as Dada rightly mentioned, that, you know, of course, a lot of players are not there in the side, you know, so that will also help Hardik to a certain point. And why I say that, Sakshi, is because, you know, new faces coming in, youngsters facing in, there'll be, you know, that fire in the belly to perform, and they'll be eager to form. Yes, and, you know, you need those new faces now. You know, once you lost a tournament, you haven't performed that well up to the expectations as the Indian team didn't deliver in Australia. So, you know, when new faces join and new youngsters, you know, who play a lot of domestic cricket, so they'll be in good touch. You know, I'm just mentioning a few names here, like the likes of Sanju Samson, Ishan Kishan, Shubman Gill. So I think that will make a big difference to the side. And, you know, now it all depends on the skipper as well, you know, how he can lead the side, because he'll have to, of course, you know, conditions in New Zealand are not going to be easy. They're challenging, they're a good side, they're playing at home. So I think it's going to be a different dimension altogether. But I think now Hardik has to, you know, put his hand up, because as a senior player, as an all-rounder, as a captain, he'll be expected to deliver for his side. And once he does that, I think if the team does well, I think the selectors can really look up to him for a longer run as a captain. और आपने यहाँ पर अजय एक बहुत ज़रूरी बात कही अभी कि हार्दिक पांड्या अगर कप्तानी की हैट पहनने वाले हैं तो we'll be looking at some changes happening also, because given the fact कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स इस इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे का हिस्सा बन रहे हैं. वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वेरी सून जो टाइम गैप रहा है, तो काफ़ी सारे नए खिलाड़ी नहीं कहेंगे बट यंगर प्लेयर्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड. इंद्रनील, आई कैरी दैट पॉइंट फॉरवर्ड टू आस्क यू कि क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या वो कड़ी या वो रोल निभाने वाले हैं जहां पर वो इस टीम के अंदर will be bringing some fresh or new blood into the squad now, which has been a talk. I mean, obviously, you know, the oldies will get out and the newbies will come in, and you can't call them newbies because they're ready-made player. It's like ready-made clothes. You could just go and wear them and start, you know, enjoying your party. But coming to Hardik Pandya, I would love to see him batting up the order, because a lot of these slots are going to get vacant, and he's someone who lomes taking chances. And Hardik going up the order. You mean as a opening batsman? No. I mean, somewhere, you know, one out. I mean, 3 or 4 or something like that. You know, 1 down or 2 down, something like that. Because he can really, he's a typical player who can build a game, who can build an innings, and also you know, play the role of a finisher. And 20 over is one format where you can afford to do that. One guy who can
also build the innings and also finish the game. And I don't know why it was only one finisher they sort of prepared for this World Cup, which was Dinesh Karthik. By default, he became a finisher because he was getting those scores. But someone who would start a good knock. Yeah. Someone up the order. If Hardik is there on the 5th over or 6th over in a game, I'm sure he's going to stay till the end and finish the game for India. And that's the kind of Hardik Pandya we're talking about. MS Dhoni always hesitated. He never went up to build an innings. He was always a finisher. But Hardik is someone who can play and that's why I'm saying why he can play as a batsman without bowling. Suppose tomorrow he has got some problem with his injury problem, he can still bat and can still field, still throw the ball, still throw his body, and then he can push himself up the order where he can build innings and also end the innings. एंड हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसे खिलाड़ी इनफैक्ट इन रीसेंट टाइम्स जिनको हम देखते हैं कि ही कैन बैट एट एनी ऑर्डर व्हेनेवर सेंट टू कम इनटू प्ले, चाहे वो थर्ड स्पॉट पे आए चाहे फोर्थ या फिर मिडिल ऑर्डर में भी आए हो. ही हैज़ कम अप एंड लिव्ड अप टू द डे एंड लिव्ड अप टू हिज नेम और रिक्वायरमेंट जो रही है. एंड आई थिंक अजय, वो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ प्लेयर टू बी कॉल्ड दैट ही इज़ मल्टी फेसेटेड और मल्टी डायमेंशनल और ही कैन वेयर ऑल हैट्स, दैट ही फिट्स just effortlessly into the spot he's sent into. Absolutely, and that is what you call talent. That's what you call skills. और ये कई बार देखिए, I think it's also associated with the player कि आप कितना लंबा खेल रहे हैं. But sometimes talent, is आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, talent is something very different. So I think this man has got that. His ability is different, and he can change the course of the game. He knows exactly how to go about. And I think कहीं ना कहीं now he's got to understand, being a captain, being a leader. What role is also assigned to him. I'm sure that someone like VVS Lakshman, who's with the side now, would be having a talk with him कि कौन से नंबर पे उनको बैटिंग करनी है, क्या कब उनको गेंदबाजी करनी है, because these are going to be important factors. Because as a captain, as a leader, you got to use the best of your ability that you have, to be on display. So I think that's going to be important for India now and for a captain as well. और मुझे लगता है इनके पास वो जो skills है, that is absolutely the talent that he's got. Because वो जो talent है वो एकदम नहीं आता. That either you got it or you don't have. Of course, hard work is something different. You can always shape up your game. You can step it up. But कहीं ना कहीं talent ऐसी चीज़ है जो कई बार आपको होती है. You see a man like Kapil Dev, absolutely talented. उनका जो outswinger था, I played a lot with him at the club level. वो जो जैसे वो दौड़ते थे लगता था क्या मतलब bowling कर रहे हैं. So that's something inborn. और कई बार उसको आप कैसे आगे लेके जाते हैं, that's up to you. And that's hard work. That's where the hard work कहीं ना कहीं polish करना पड़ता है अपनी game को. But I think talent is always there, and this man has got the talent. Very well put. In fact, कि talent हार्दिक पांड्या के पास ऑलरेडी है जो हम देखते हैं, और अगर talent के साथ आप born है तो hard work is going to be that perfect combination जिससे आप उसको hone कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं. But then as we say that Hardik Pandya, the man, the professional, is definitely a player who has been born with a lot of talent because he can wear almost any hat that he is given to be wearing on a particular day, and that's the beauty of the man that we call Hardik Pandya. यहाँ से उम्मीद रखते हैं कि जैसे हमने आज के शो की शुरुआत करी थी दोस्तों कि क्या यहाँ से एक नए भारतीय टीम का आगाज़ होने वाला है हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंदर. उम्मीद यही रखेंगे कि आने वाले समय में उनकी कप्तानी के अंदर इंडियन टीम एक नया रुख, एक नया राह देख सके और अपने आप को अगेन दे आर एबल टू रीबिल्ड देमसेल्व्स बैक इनटू अ टीम दैट कैन बी सीन टू गो बैक टू winning like the old days. On that note, thank you so much, gentlemen. Thank you. It's been an absolute pleasure. इंद्रनील and अजय, आप दोनों के साथ आज यहाँ बात करने के लिए thank you so much. Pleasure. और दोस्तों, इसके साथ हमारा सफ़र यहाँ पर ज़रूर ख़त्म होता है, लेकिन सफ़र कभी ख़त्म होना नहीं चाहिए. इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आज क्रिक लाइव का सफ़र यहाँ पर आकर ख़त्म होता है, लेकिन ही इज़ होपिंग दैट यू ऑल हैव अ लवली डे. गो ऑन, कीप ऑन वॉचिंग DD स्पोर्ट्स फॉर ऑल द लाइव स्पोर्ट्स अपडेट्स जो हम आपके लिए लाते रहेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेने का समय है. गुड बाय, हैव अ गुड डे.